I'm Dr. Shweta, MSc PhD Botany, and also in BSc Biology. I'm MCA and MA English, B.Ed and M.Ed, and formerly I was lecturer in botany. Then I became lecturer. Then I became principal in Athra. Now I'm teaching to the CBSE students, to board students, और पीछे इसमें जो बच्चे लिए हैं जिन्होंने मुझे बोर्ड ले रखा है उनको मैं पढ़ा रहा हूँ। कोई दिक्कत हो मुझे बताइए कि प्रॉब्लम। नाउ आई एम टीचिंग टू यू हार्ट ऑफ मैन। हार्ट ऑफ मैन कंटेन्स four chamber, two auricle, two ventricle. In ventricle, left coronary arch, then great cardiac vein, then interventricular sulcus, then left ventricle, then right ventricle. It contains right cardiac vein, then it contains right coronary vein, then it contains right atrium, then it contains superior vena cava, then left aorta. Now we see the heart internal structure. In heart internal structure, we know that between the auricles there is found intravascular septum, and a septum is found below septum. In ventricles, it is interventricular septum. Then papillary auricle, left auricle is found. Then endothelium, then myocardium. These are the heart muscles, and there is a left auricle, and there is a ventricular sinus. In between auricle and ventricle, there is found the septum, and a valve is found that is called bicuspid valve. And in the right ventricle, there is found a tricuspid valve which contains 3 flaps, and auricle contains 2 flaps. These 2 and 3 ventricle flaps ब्लड को जाने से रोकते हैं, ब्लड बच्चे की तरफ एंड ब्लड वापस नहीं आता है. It contains intravena cava, right coronary artery, then right coronary vein जो ब्लड लाती हैं, amena intravena cava, seminal valve, then fossa valve, right atrium, मतलब coronary sinus, opening of intravena cava, tricuspid valve, semiculi, right auricle, and left ventricle. It is the internal structure of heart. इसका हार्ट जो होता है दैट इज मस्कुलर. नेचर इट इज फाउंड ऑफ मस्कुलर. नाउ वी सी द फ्लो ऑफ ब्लड, हाउ द फ्लो ऑफ ब्लड टेक्स प्लेस. So the flow of blood from the auricle, it comes ventricle, then it goes to the coronary veins and goes to the lungs for purification. Then it goes to the, then it is found, then it is go to the which is bicuspid valve, tricuspid valve, this tricuspid valve, and then it contains aorta and pulmonary aorta, which goes into the body, and blood goes to the body, and the impure blood goes to the pulmonary vein for purification. Now I see, अगर आप देख रहे हैं इसमें तो you are looking sino-auricular node and sino-auricular. फर्स्ट ऐसे नोड, साइनो-auricular नोड जो होता है ये, इससे बंडल ऑफ फिश, there are 2 branches and they contain protein in the system by which the blood goes throughout the body. And second is internal artery and
active ventricular valve, then right ventricle, then Purkinje aorta, then right and left Purkinje system, then bundle of fish, then left auricle. Bundle of fish contains small Purkinje system and that goes into the throughout the blood. Now we see heart beats pulsation. हार्ट एक पंप की तरह कार्य करता है। इसमें दोनों ऑरिकल्स पहले कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, डायस्टोल, सिस्टोल, और तब ये फैलता है तो उसको बोलते हैं डायस्टोल। एक डायस्टोल, साइस्टोल और सिस्टोल मिलकर दे फॉर्म वन हार्ट बीट एंड इट इज़ नोन एज कंप्लीट साइकिल, नोन एज कार्डियक हार्ट साइकिल। कार्डियक हार्ट साइकिल। There is two atria contract, then systole, then ventricular valve 0.3 second, then in aorta 6.4 second, diastole, then auriculoventricular node, and throughout the blood circulates. Heart sound is known by stethoscope. Bicuspid valve we know the blub की आवाज़, and then ventricle come to the by we look that is called dub की आवाज़, and lub and dub both forms one cycle, and it is 75% and reach throughout the body. Then we see the electrocardiograph or ECG. ECG में हम देखते हैं PQRST, इनमें सब में दिखाई देते हैं, ये इलेक्ट्रोड्स होते हैं और जिनसे हमें पता चलता है कि हार्ट किस प्रकार से काम कर रहा है। रिकॉर्डिंग होती है इसकी और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ बनता है। हम इस डायग्राम में देख रहे हैं कि पूरा ग्राफ किस तरह बन रहा है। यू कैन सी इन दिस डायग्राम, इलेक्ट्रोड एक वेवी के रूप में होता है, ग्राफ होता है, और एक लहर उठाई दी जाती है, पी लहर कहते हैं, और QRS से एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम बनता है जो आर्टेरियल सिस्टोल को बताता है। इस तरीके से हम PQRST को से इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ या ECG हम देख सकते हैं। Now we see the double circulation. It is very important. Heart is very important. Double circulation is very important. In diagram you see RA, LA, RV, LV. Left ventricle, right auricle, right ventricle, and this is systematic circulation. Then blood goes in deoxygenated. Here it is deoxygenated, here it is deoxygenated, here is oxygenated, and respiratory circulation takes place. Deoxygenated blood goes into lungs, pure blood. We see in this diagram, here you see double circulation. Double circulation, lungs to the pulmonary artery, pulmonary veins, dorsal aorta, left auricle, right auricle, large auricle, monstrosity, heart, and this is vena cava. Then body of parts. When it goes into the body, it is called circulation. It is called body circulation, and which circulation takes place in the lungs, it is called pulmonary circulation. In this diagram we are looking right auricle, deoxygenated blood जा रहा है, lungs को जा रहा है, then left auricle, then left ventricle को जा रहा है, फिर right ventricle को जा रहा है, इधर blood body parts से इकट्ठा होकर deoxygenated blood right को जा रहा है. It is called double circulation. It is called double circulation. If you see that heart which control कौन करता है, that is controlled by sympathetic system and a hormone acetylcholine helping. It is न्यूरो हार्मोन होता है जो इसमें काम आता है.
चलो भाई हो गया भैया, कुक्कू भैया, ओ कुक्कू, पूरा हो गया, पूरा हार्ट खत्म कर दिया मैंने।